Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series. In the previous lecture we discussed the fundamental theory of the parliamentary and presidential democracies और हमने briefly उनके comparison को discuss किया था. Today we'll be doing the past paper question which is very important कि parliamentary democracies को क्या principal advantages और disadvantages हैं presidential democracies पे. तो ये मल्टीपल टाइम्स भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम आंसर जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले बताएंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के एडवांटेजेस ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो ऑटोमेटिकली अगर पेपर में लेट से सवाल आता है कि प्रेसिडेंशियल के पार्लियामेंट्री पे वो फायदे और नुकसान बताएं, तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी. यानी ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर एडवांटेजेस ओवर प्रेसिडेंशियल, these are the disadvantages of presidential over parliamentary. तो you can reverse the two. तो सबसे पहला एडवांटेज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर है वो ये है कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव. सिंस बोथ आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, इट्स इजी टू कोऑपरेट ऑन दोज मैटर्स. इसमें मैंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की निशानदेही की है कि एक आपकी लॉ मेकिंग और मनी ग्रांटिंग अथॉरिटी है, वो होती है आपकी लेजिस्लेटर, क्योंकि लॉ मेकिंग लेजिस्लेटर करता है और लेजिस्लेटर की मर्जी से पैसे सैंक्शन होते हैं अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और चीजों को. बजट आपका पार्लियामेंट बनाती है. और दूसरी है लॉ इन्फोर्सिंग एंड मनी स्पेंडिंग अथॉरिटी, वो आपका एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि उसने उस लॉ को इन्फोर्स करना है जो पार्लियामेंट पास करती है और उस पैसे को स्पेंड करना है. क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी कैबिनेट आती है प्राइम मिनिस्टर के नीचे या प्रेसिडेंट के नीचे, और वो कैबिनेट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, और वो उन्होंने उस पैसे को स्पेंड करना होता है. So because both are part of the same chamber and both are, if there's a fusion of the two, it is easier to cooperate and it is easier to like smoothly steer the system in that regard. The second important is that there is ultimate sovereignty of people. इसके अंदर जो philosophical idea वो ये है कि चूंकि presidential systems के अंदर आपकी cabinet is not elected by the people, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है, वो जिस मर्जी को अपने कैबिनेट में रख ले, किसी को भी कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दे, किसी को कुछ भी बना दे. तो इसीलिए यानी पीपल्स की सॉवरेंटी वहां पे कहा जाता है, पॉपुलर सॉवरेंटी थोड़ी सी कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं होती. जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट, योर एवरी मिनिस्टर इज जनरली पार्ट ऑफ द लोअर हाउस. कभी कभी अपर हाउस से भी होता है जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली तो अपर हाउस के मेंबर्स को भी इलेक्ट किया ही हुआ है, तो चले वो भी इन सम वे इज योर रिप्रेजेंटेटिव. बट प्रेडोमिनेंटली कैबिनेट के मेंबर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर के नीचे नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं या जो लोअर हाउस है उसके मेंबर्स होते हैं, व्हिच आर इलेक्टेड बाय यू. सो योर मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय योरसेल्फ, व्हिच मींस दैट द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी इज फुलफिल्ड मोर and is seen as more predominant in the parliamentary democracies than in the presidential ones. The third is the responsiveness and the promptness of action. Because of the harmonious cooperation between the two branches, because दोनों एक ही chamber में मौजूद हैं, because there are no institutional lags and delays and transfers and communication gaps, it is easier for the parliamentary democracies to respond to the changing issues. That's the first point. The second important point is that presidential democracies के अंदर अमूमी तौर पे आपके इलेक्शंस के टाइम वेरी करते हैं. सो प्रेसिडेंट का टाइम इलेक्शन एक अलग टाइम पे होगा, कांग्रेस का इलेक्शन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अलग टाइम पे इलेक्शन होगा. उसका नुकसान कभी कभी ये होता है, बल्कि अक्सर ये एक चीज नजर आती है कि प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पार्टी एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंग टू अ डिफरेंट पार्टी. तो इसका मतलब एक वो पार्टिजनशिप भी आ जाती है आपकी, वो आपके बीच में एक टसल भी आती है पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से, जिसकी वजह से यू डोंट हैपन टू प्रोड्यूस द मोस्ट रिस्पॉन्सिव एक्शंस. क्योंकि इसकी वजह से ग्रिड लॉक्स बन जाते हैं, लाइक प्रेसिडेंट और कैबिनेट इज नॉट एग्रीइंग विद व्हाट द कांग्रेस इज सेइंग एंड द वाइस वर्सा. सो उसकी वजह से बड़े मसले हो जाते हैं. जबकि पार्लियामेंट में अमूमी तौर पे चूंकि जो एग्जीक्यूटिव की पार्टी है यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की पार्टी है, वही पार्टी मेजॉरिटी में भी है हाउस के अंदर. तो इसका मतलब जनरली प्राइम मिनिस्टर के लिए इजी होता है अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन पास करवाना, क्योंकि उसी की पार्टी मेजॉरिटी में है, इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर है, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर ही ना हो. That is why it's easier for him to implement things and do things
and like do shit. It's easy for the prime minister. But presidential systems के अंदर it's quite likely कि चूंकि different parties हैं तो वो दोनों में executive में उसके अंदर because theoretically possible people vote for a different person from a different political party in the office of president and vote for a different person in the house. तो इसलिए presidential system के अंदर there is likelihood of those gridlocks which is minimized in the parliamentary democracies. The natural corollary of this phenomenon is that there is more flexibility and elasticity in parliamentary democracies than in presidential democracies because आप compromises कर सकते हो क्योंकि सारे ही चैम्बर का हिस्सा होते हैं and then it's easier to change laws. आप उसी के मेंबर हो. पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा स्वेयर कंट्रोल होता है. It's easier for them to change things according to situations. The fifth is the idea of greater accountability. इसमें हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि चूंकि आपका प्रेसिडेंट और आपका की कैबिनेट are not answerable to legislator, but in the presidential democracies, but in the parliamentary democracies, you have greater accountability because both prime minister and the cabinet are answerable to the legislator. What are the disadvantages or the demerits of parliamentary system over presidential systems? ये parliamentary system के नुकसानात हैं और presidential system के फायदे हैं. इसी तरह ये parliamentary system के फवायद हैं और presidential system के नुकसानात हैं. तो क्या फायदे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या नुकसानात हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के और फवायद हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के? सबसे पहला तो ये कि पार्लियामानी निजाम सेपरेशन ऑफ पावर्स, ट्रोइका ऑफ पावर की थ्योरी को ब्रेक करते हैं, इसको वायलेट करते हैं. तो ट्रोइका ऑफ पावर की थ्योरी हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में सेपरेट आपने को पावर्स इन करनी चाहिए इंट्रोड्यूस, इस आइडिया को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. और हमने देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो कि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी से हमें मिलता है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स एब्सोल्युटली ना हो तो वो ऑटोक्रेसी क्रिएट करती है. ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है, और ये आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं कि बर्तानिया के अंदर कैबिनेट डिक्टेटरशिप है कि हर चीज ही कैबिनेट की मर्जी से होती है. क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर का भी हिस्सा है. प्राइम मिनिस्टर को हमेशा मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल होती है हाउस के अंदर. प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, उसके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करती, वो चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते. तो देयर इज अ टर्म फॉर दिस दैट ब्रिटेन हैज कैबिनेट डिक्टेटरशिप, and this could be traced to the idea that it violates the theory of separation of power. Second, it has the possibility of creating the unstable system of government. Why? Because अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस को डिसॉल्व कर देता है किसी भी वक्त, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है प्राइम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व कर दिया, सब थिंग्स लाइक दिस. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो प्राइम मिनिस्टर आपका चेंज हो गया. लाइक आपके 2-2 साल बाद थ्योरेटिकली हर दूसरे दिन चौथे दिन आपका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है. पाकिस्तान की तारीख देखें तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना वक्त पूरा नहीं किया, बट वो तो चलें, दे वर आउटस्टेड ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स, बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी आपके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स उतरते रहे. तो ये अमेरिका, बर्तानिया में भी इस तरह आपको नजर आता है. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए किसी भी टाइम बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उतारा जा सकता है, पाकिस्तान का उतारा जा सकता है, इंडिया का उतारा जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं उतारा जा सकता. यानी ये नहीं हो सकता कि हाउस कहे कि आज हमारा दिल कर रहा है प्रेसिडेंट को उतारने को तो हम उतार दें. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक फिक्स्ड टेन्योर है, फिक्स साइकिल है, उसी पे उसके इलेक्शंस होंगे. अनलेस देयर इज अ ग्रोस मिसकंडक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट, फिर उसकी इंपीचमेंट करती है. पर हाउस ऑफ इंपीचमेंट का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है. दैट इज व्हाई नो प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन इम्पीच्ड. एक इम्पीचमेंट की हेयरिंग आई थी latest lead for Bill Clinton on Monica Lewinsky affair. Before that, for you had for Andrew Johnson, and you also had impeachment for Richard Nixon on Watergate scandal. लेकिन none of them were impeached. उनकी hearing हुई थी, but none of them were impeached by the House. तो presidents generally fixed schedule की वजह से वो एक stable government चलती रहती है. लेकिन इधर पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, इस चीज के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, गवर्नमेंट को हटाई जा सकती है. प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व दी असेंबलीज और वो असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं. वो जो होता है ना, जनरल इलेक्शन कॉल किए जाते हैं वक्त से पहले, तो वो चीज अमूमी तौर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल इन द प्रेसिडेंशियल कंट्रीज.
देयर इज मोर एंटागनिज्म बिटवीन पार्टीज, और इसके लिए एक वर्ड भी यूज होता है, पार्टिजनशिप. Some people argue that there are more antagonism involved in the parliamentary systems than in presidential, because एक पार्टी आपकी प्राइम मिनिस्टर वाली पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी है, जिसको ट्रेजरी बेंचेस कहा जाता है, जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, और एक आपकी बाकी जो हारने वाले वो ऑपोजिशन जमाते हैं. तो चूंकि कल्चर इस तरीके का गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का, बिकॉज इट्स अ विनर और अ लूजर गेम इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, either you win or you lose. That is why there is a constant tussle between these two entities. Opposition is constantly hammering on the government even if it is irrelevant. Like वो मीनियल इश्यूज को भी, जो इररेलेवेंट इश्यूज को भी आपको न सामने नजर आता है कि वो उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं. तो ये वो फीचर है जो कि एंटागनिज्म को जनरेट करता है. जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रूम मौजूद होता है, क्योंकि बहुत दफा मुख्तलिफ इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट का अलग टाइम पे हो रहा है, हाउस का अलग टाइम पे हो रहा है, तो इट्स वेरी इजी कि आपका पार्टीज को इस तरह एडजस्टमेंट मिल जाए कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट है और दूसरी पार्टी की हाउस में मेजोरिटी है, तो उसकी वजह से एंटागनिज्म कम होने का ये theoretically probability है. The fourth is the inefficient administration. Why do some people believe that? It's because आपकी कैबिनेट आपकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की हेड होते हैं, इंचार्ज होता है, एंड योर कैबिनेट इज सपोज टू स्टीयर द व्हील ऑफ द गवर्नमेंट. उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चूंकि एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी मिनिस्टर्स आपके कैबिनेट के दे कैन ओनली कम फ्रॉम द पार्लियामेंट, विच मीन्स कि it's very likely कि the people who are heading different departments are not experts in their field. Like अभी की कैबिनेट उठा के देख लें, पिछली कैबिनेट उठा के देख लें पाकिस्तान में, none of those people have academic backgrounds or technical expertise in their departments. Like आपका water and power का जो इंचार्ज है, मिनिस्टर है, is generally does not have technical expertise in that field, but is nonetheless the minister. तो क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में रूम ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आपका मिनिस्टर उस तरीके से it could happen by sheer luck or chance, but generally it's not possible क्योंकि आपने उसी लॉट में से चूज करना है. But in the presidential systems, by contrast, the president can pick and choose anyone. So oftentimes presidents choose very expert people for the expert positions, and मतलब right man for the right job वाला काम presidential democracy के अंदर, कैबिनेट के अंदर आसान होता है. The fifth is the monopolization of political power. Because you have a fusion of executive and legislator, और executive की अमूमी तौर पे legislator में भी majority होती है, because otherwise that wouldn't be an executive. क्योंकि आप अगर majority में हो पार्लियामेंट में तो ही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इसीलिए आपका प्राइम मिनिस्टर भी आपका होता है, पार्टी भी आपकी होती है, एक सेपरेट चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी की का आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इस तरह. तो ये वो चंद चीजा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इन दोनों सिस्टम्स के एक दूसरे पे. The last important point is that can we bifurcate and can we divide all systems based on these two ideas कि क्या दुनिया की सारे systems presidential और parliamentary divide में आप classify कर सकते हैं? The broad answer is yes, but the specific answer is no. Broadly एक spectrum है कि you have parliamentary democracies, you have parliamentary systems and you have presidential systems, and you have certain countries which take both. तो जैसे फ्रांस है, फ्रांस को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है कि जहां आपका प्रेसिडेंट भी है और आपका प्राइम मिनिस्टर भी है, और प्रेसिडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं. वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से कम पावरफुल है फ्रेंच प्रेसिडेंट, लेकिन वो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है. तो वो बीच का उन्होंने एक सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से डिजाइन कर दिया. तो इस तरीके से आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेगी जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर, जिस तरह मैंने बताया था कि अमूमी तौर पे एक नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी होती है, which means that the president is nominal, he does not have real powers. But कुछ इस तरह की कंट्रीज हैं which have parliamentary systems with an executive presidency. तो यानी उन्होंने दोनों के फीचर्स को मिला लिया. तो generally there are countries in the world that could be strictly classified as presidential countries, जिनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी. There are countries which could be strictly classified as parliamentary countries, जिनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी. And there are some countries which lie in the middle. जिस तरह फ्रांस की मिसाल मैंने आपको
दी है, इवन टर्की फॉर दैट मैटर, मगर टर्की ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर दिया. So this is the brief general outline of this issue. You need to be very clear on the conceptual framework on which we divide presidential and parliamentary democracies, which is primarily rooted in the relation between the legislator and the executive. If the legislator is independent, or other way, if the executive is independent of the legislator, that is a presidential system. If the legislature and executive are fused together in a single body, then that's parliamentary system. And both tend to have their own benefits and their own demerits. Based on that, you should be quoting as many examples as you can in this question. Quotations, if you could, include about different people have saying different things about different individuals. तो ये आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है. प्रेफरेबली मेक अ कंपैरिजन चार्ट बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. जैसे हमने ये 5 पॉइंट्स निकाले, आप इनको एक कंपैरिजन में इस तरीके से लेकर आए एक दूसरे के सामने, एंड मेक अ वेन डायग्राम में भी एज वेल. तो इस तरह की चीजें ऐड करने से यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.